Still population. Right. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Right. So today what we will be looking into is more of kind of a different thing than what we have been covering till now. So we finished users, profiles, objects, fields, and everything, right? So what actually today I want to focus on is within Salesforce, we have a lot of automation which we can do on object. So this is with respect to data. जो हमारा डेटा है उसमें हमको कुछ ऑटोमेशन जो बिल्ड करने होते हैं तो उसमें Salesforce हमको क्या क्या ऑप्शन देता है. So today's outline will be a bit different. Today, instead of going into only one topic, one kind of automation, what we will be doing is today we will cover kind of the basic of all the different kinds of automation जो Salesforce में हमारे पास है. हम हर एक का बेसिक मैं आपको दिखाऊंगा and we will get to know. After that, in the next classes, what we'll be doing is हम हर एक ऑटोमेशन के अंदर अलग से डिटेल में पूरा बनाएंगे ताकि हर टाइप का ऑटोमेशन कैसे हमको बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग अगर आपको बाद में चेक करना है कुछ करना है तो कैसे वो होगा. So that will be the focus. So today will be more of a summary class जहाँ पे हमारे जो जो मेन ऑटोमेशंस हैं Salesforce के अंदर हमारे वर्क ओल्ड रूल्स है जो वर्क फ्लो रूल्स है राइट. उसके बाद प्रोसेस बिल्डर था फ्लो था राइट. तो ये हम आज कवर करेंगे जस्ट द ओवरव्यू ऑफ दिस राइट. So any questions before I move regarding what all content we have covered till now? आपको जो एक्सरसाइज दिया था वो एक्सरसाइज करने में सबको कोई किसी को कुछ इशू आया कुछ फेस किया किसी ने कोई प्रॉब्लम या एवरीवन वाज होपफुली एवरीवन शुड बी एबल टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज प्रॉपर्ली शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. सर आई हैव वन डाउट. जो रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने के लिए बोले हैं वो दो अलग अलग रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने हैं ना. राइट. मीन्स ओके. और उस हिसाब से पेज लेआउट क्रिएट करना है दो अलग, क्योंकि एक Yes. उसमें ऐसा लिखा है कि एक रिकॉर्ड टाइप जो भी है मीन्स पेज लेआउट डिफॉल्ट पेज लेआउट असाइन करना है एक रिकॉर्ड टाइप को. हाँ तो ऐसा आपका लिखा है. नॉर्मल सी द थिंग इज वन लेआउट इज ऑलवेज रेडी राइट. यू विल ऑलवेज हैव वन लेआउट राइट. तो इसलिए जब भी आप रिकॉर्ड टाइप बनाते हो काइंड ऑफ योर मेन जो रिकॉर्ड टाइप रहेगा द मोस्ट कॉमन रिकॉर्ड टाइप राइट. तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या करते हैं जो डिफॉल्ट लेआउट है उसको हम उस रिकॉर्ड टाइप पे रख देते हैं. उसके बाद आफ्टर दैट एनी अदर रिकॉर्ड टाइप वी कीप क्रिएटिंग वी विल कीप एडिंग इन पेज लेआउट. ओके ओके. तो जो हमने दो रिकॉर्ड टाइप क्रिएट किए जैसे फुल टाइम और पार्ट टाइम, so according to that we will create the page layout full time and part time page layout. Right. Yeah, okay. Hold on. Just yeah, hold on Ankita 1 second. I see someone in WhatsApp group is Vaishali. She's saying she's waiting, but it is not showing to me. So what is wrong with that? So late if you guys join. Hold. Right. Yeah, I see you have raised your hand. You have any query, Ankita? Yes, sir. Actually, the Yes. exercise which you have given, no, in that like create a custom user, and then you said ki assign the employee profile. I just didn't get it. That's why I couldn't do it only. The meaning of that exactly. Yeah, so when we were going through the users, right, I Yeah, told you, right, with any user that you create. I have created the user, sir, but the assign employee profile that I didn't get it only. Yeah, so when you create a custom profile, so in your case, what the task was that you will take any like how all these profiles are here.
Like last time I'd shown you all these custom profiles which I had created, right? So Yeah. similarly, you have to create one profile. In your case, you can go from scratch or you can, clone. Like, I had told initially that clone from a standard one, then make your modification, right? That is the approach to follow normally. So you have to clone a profile from here, which would be, the name was employee profile. So it will only have those permissions which an employee should have. Okay, Then okay. when you create a user, custom user, and to that user, you will assign that employee profile. Okay. Okay, sir, I'll try doing it. Yeah. Thank Clone you. from one of the standard profiles. See, the Sure, thing sure. is, जो आपका standard profiles रहते हैं, why people prefer to clone? I'll give you an example. See, Mm-hmm. let's go to any one of these standard profiles. Let's go to the standard user. Now, अब ये जो मेरा स्टैंडर्ड यूजर है, यहाँ पे पेज लेआउट्स वगैरह मेरे को दिख रहा है. मोस्ट ऑफ द परमिशन यू कैन सी आर विजिबल. But if I actually try to edit this, apps you can edit, right? The types of customization it wants to provide, you will be able to do. But if you actually come to the object permissions, ये आप modify नहीं कर सकते, right? Because जो standard profiles है, those are created with the purpose of a specific role, जो एक currently using customers के लिए targeted है. तो अचानक से अगर Salesforce क्या करेगा, अगर ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स को चेंज करना शुरू किया, राइट? दिस इज फॉर आउट ऑफ द बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन. जो लोग बस नॉर्मल Salesforce लेते हैं, ज्यादा कस्टमाइजेशन है नहीं यूज करते हैं, उनके लिए दिस इज गुड. बट you can't modify all of this based on your requirement. You create, then you modify. That is why I have suggested to clone and create a new profile and then work with. Okay, sir, thank you. I'll try doing it. Sure. Right. Anyone else? Any queries? किसी और को कोई इशू फेस हुआ ये करने में? No one? That's great then. Then let's proceed with today's content. Now, say I have an employee, right? And what we did for employee, we already did some kind of automation we had discussed, which was when we were creating a formula field, right? So formula field is also one kind of automation, but that is basically your data, राइट? आप कोई एक रिकॉर्ड ले रहे हो, कोई एक फील्ड ले रहे थे, उसके बेसिस पे आप जाके क्या कर रहे थे, दूसरे किसी फील्ड का वैल्यू सेट कर रहे हो. So that is kind of more of a calculation or an expression you want to do. But what if you want to do, say, a bit more complex, uh, automations? Like, let's take an example. अभी हम जाते हैं employee पे जाते हैं and let me create a field on employee, a lookup. I'll create a lookup field on employee with an account, right? So kind of basically, let's take account is a company, then each employee is a member of that company. Let's make it visible to everyone and add it to both page layouts. Fine. Now, अभी हमने क्या किया, एम्प्लॉय पे एक अकाउंट का मैंने लुकअप कर दिया. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मेरा जब एम्प्लॉय अपडेट हो रहा है या कोई नया एम्प्लॉय क्रिएट हो रहा है, तो इन दैट केस व्हाट आई वांट, मेरा जितना भी अकाउंट्स है, राइट, हर अकाउंट पे एक मेरा स्टैंडर्ड ईमेल है, राइट? So this is the website field. Let's go to the email is not added on the page here. Website is added. No worries. Let's do one thing, right? So हर अकाउंट में मेरे पास कोई ना कोई रिलेटेड कॉन्टैक्ट होगा. दिस इज योर स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जो ऑलवेज ये स्ट्रक्चर ऑलवेज प्रेजेंट है. हर अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट इज अवेलेबल.
राइट, क्योंकि आप जब भी कॉन्टैक्ट इंसर्ट करते हो तो आपको अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है। व्हाट आई वांट एज एन ऑटोमेशन इज कि मेरा अगर कोई एक एम्प्लॉय क्रिएट होता है तो वो एम्प्लॉय जिस अकाउंट का रिलेशन में आया उस अकाउंट के हर कॉन्टैक्ट को मैं एक ईमेल भेजूं कि वी हैव गॉट अ न्यू एम्प्लॉय। नाउ थिंक ऑफ इट एज ए लॉजिकली, अगर आप एक कंपनी में हो तो जब नया ज्वाइनी आता है, किसी प्रोजेक्ट में आता है, राइट, या किसी टीम में आता है, तो उस टीम के लोगों के पास मेल लोग करते हैं, राइट, मैनेजर मेल करता है या समवन एल्स मेल्स, दिस पर्सन हैज जॉइंड आवर ऑर्गेनाइजेशन। डज दैट हैपन और नॉट? Yes, sir. Anyone has seen this happen? Yes. Yes, sir. Right, right. So अब इन दिस केस व्हाट आई वांट टू डू इज कि ये चीज मेरे को मैनुअल नहीं रखनी, मेरे को ये ऑटोमेट करना है। तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कि मेरा कुछ अपडेट होगा, वो अपडेट होने पे, कुछ एक एक्शन होने पे कहीं और से डेटा लेके वहां पे मेरे को कुछ सेंड करना है। सो इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट यू नीड इज कोई ऑटोमेशन टूल्स जो हमारे पास हो जिससे हम और ये एक्शंस को परफॉर्म कर सकते। नाउ those automation tools are available within Salesforce. Now, out of this, we will go one by one through the basic ones, and then the one which is most in use right now and is also the recommended is flows. So we will cover it, in last. तो इसलिए मैं बाकी के ओल्डर वंस का मैं एक ब्रीफ समरी आपको दूंगा, एंड द फ्लोज इज द वन जो हम डिटेल में कवर करेंगे। राइट, नाउ द ओल्डेस्ट वन बेसिकली जो जब सेल्सफोर्स क्लासिक में था तब से जो हमारे पास है वो है हमारा वर्क फ्लो रूल। राइट, वर्क, अब वर्क फ्लो के अंदर इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट यू कैन सी हियर इज वर्क फ्लो एक्शंस and the other one is workflow rules. So let's go to workflow actions first. I'll go one by one to each of the actions. Now, what you can define inside workflow action? Workflow action के अंदर आप basically वो task को define करते हो जो आपको perform करना है. Right. So in our case, what was the task we wanted to do? We wanted to send an email. Right. So if I create an email alert here, so देखो हमारे पास क्या क्या इनपुट है। हम कोई एक ईमेल का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। लेट्स से इन आवर केस व्हाट वी वांट इज इट शुड बी रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट। राइट, देन कौन कौन से यूजर्स हमको सेंड करने हैं वो हम यूजर्स ऐड कर सकते हैं। आई कैन सिलेक्ट ऑल 3 यूजर्स। राइट, एंड दिस इज नॉट जस्ट यूजर्स, आपके पास अगर कोई क्यू है, राइट, तो आप क्यू यूज कर सकते हो। राइट, ओके, वी डोंट हैव एनी ग्रुप्स हियर, बट जो रिलेटेड फील्ड्स होती है लुकअप के, अभी हमने ऑब्जेक्ट कौन से सिखाया, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के साथ रिलेटेड जो जो हमारे पास लुकअप फील्ड्स है वहां से आप यूजर लेके आप सेट कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट दिस यू कैन आल्सो ऐड जस्ट हार्डकोर ईमेल आईडीज आल्सो। राइट, कि मैं चाहता हूँ इस ईमेल आईडी पे जाए, ऑलवेज इस ईमेल आईडी पे जाए। तो मेरा केस क्या होगा, से हमारे पास कोई एक एलियस है जो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के पास जाता है। राइट, ऑल एम्प्लॉयज एट द रेट एबीसी जो भी कंपनी है .com। तो मैं चाहता हूँ इस ईमेल आईडी पे मेरा एक ईमेल चाहिए। सो आई कैन क्रिएट एन ईमेल अलर्ट एंड आई कैन सेव इट हियर। सिमिलरली देयर आर अ फ्यू अदर टाइप ऑफ एक्शंस जो हम कर सकते हैं। फील्ड अपडेट्स एज द नेम सजेस्ट कि मैं चाहता हूँ कोई एक एक्शन होने पे कोई एक फील्ड अपडेट हो जाए। So let's do one thing. Let's go to count. मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई एम्प्लॉय क्रिएट हो तो मेरा अकाउंट साइट का वैल्यू हो जाए अपडेट अकाउंट फील्ड, मैं इसका नाम देता हूँ, अकाउंट साइट का वैल्यू हो जाए इन ऑफिस। ये मेरा जो फील्ड है ये हो जाना चाहिए इन ऑफिस जैसे ही मेरा एम्प्लॉय क्रिएट हो। तो अगेन अकाउंट, which field I want to update, account site I want to update. Now this is a text, right?
I want to set a value here. What happened? Okay, I used formula. What I need is what happened? This happened here. Why is it not taking it? Right, sorry. I need to add the field here. So let me add any field from the uh, accounts different value only. Let's take the account name and I'll add it as the text. Right. तो what I want is मेरा account site field पे भी मेरा जो name है वो copy हो जाए. This I just took as a dummy field. In normal case क्या होगा? अभी employee पे जाके कोई field बनाना पड़ेगा. वो value मैं चाहता हूँ कि account पे update हो. Right? So that kind of relation you will want. But basically what you can do is आप कोई भी related जो object है उस पे आपको कोई field update करनी है वो आप field से update कर सकते हैं. Now, other than email alerts and field updates, there is one which is the outbound messages. Now, outbound messages is a bit complex compared to what all we have been covering out because outbound message is kind of like your call out कि आप Salesforce के बाहर कुछ भेज रहे हो. This happens normally जब आप इंटीग्रेशन बना रहे हो, right? So in that case you want कि मेरा डेटा यहाँ से किसी और सिस्टम में जाए. तो लेट्स टेक इन दिस केस मैं चाहता हूँ कि अकाउंट से 5-6 फील्ड्स का डेटा मेरे को भेजना है कहीं पे, राइट? सो आई कैन क्रिएट एन आउटबाउंड मैसेज एंड आई कैन send that to an external service, right? So for outbound messages there is a bit of other configuration also you have to do. आपको एंड पॉइंट सेट करना पड़ता है कि कौन से यूआरएल के एंड पॉइंट पे आपका मैसेज है, राइट? तो दिस इज अ फॉरेन कॉल आउट बेसिकली यू कैन डू कि नॉर्मली हमारे पास ऐसे होता है ना कि अगर आपका कुछ अपडेट हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ some of you or most of you may be already investing in say stock market and something, right? तो what happens is जब आप कुछ परचेस करते हो स्टॉक वगैरह का वो करते हो उससे पहले अगर आपने अकाउंट जब ओपन किया है इट आस्क्स यू टू डू अ सीकेवाईसी, राइट? तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आप किसी एक ऐप को यूज कर रहे हो, नॉर्मली लेट्स से जीरो दा ग्रो कोई भी एक ब्रोकरिंग ऐप आप यूज कर रहे हो, बट आपका केवाईसी वो नहीं कर सकता. केवाईसी गवर्नमेंट का एजेंसी करता है, राइट? देयर इज सीएसडीएल जो सीकेवाईसी करता है. सो इन दिस केस द सिनेरियो इज आप किसी एक ऐप में डेटा डाल रहे हो, वो डेटा वहां से कहीं और जाएगा, राइट? फिर वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उसके बेसिस पे इट्स लाइक सक्सेसफुल डॉट सक्सेसफुल आपको पता चलता है. Similarly, outbound message is that, but in this case, it is just you are sending a message. You are not expecting any response, right? ये कुछ होने पे मेरे को बस डेटा भेज देना. If you are expecting a response, then it becomes a call out where response आने पे आप response से भी data आप fetch करोगे, right? So that is more of a bit complex part of the integration, but बेसिक आउटबाउंड मैसेज का मतलब आप अपने दिमाग में रखिए कि मेरे पास एक एक्शन है जहां से मैं सेल्सफोर्स से बाहर कुछ डेटा भेज सकता हूँ. किस टाइप का डेटा भेजोगे, आप कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, उस ऑब्जेक्ट का फील्ड्स का डेटा आप भेज सकते हो कि इस फील्ड में क्या वैल्यू है, इस फील्ड में क्या वैल्यू है, बस. ओनली दैट मच यू कैन सेंड फ्रॉम हियर. नाउ अदर देन आउटबाउंड मैसेजेस there is something else called send actions.
नाउ सेंड एक्शन इज सेल्सफोर्स के अंदर आपके पास नॉर्मली क्या होता है, कुछ चीजों के लिए आप अप्रूवल का प्रोसेस डाल सकते हो कि आपने कुछ मॉडिफाई किया बट इट डज नॉट एक्चुअली गेट मॉडिफाइड। वो आपके मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं, फिर वो अप्रूव होने के बाद जाके डाटा मॉडिफाई होता है। तो दैट इज समथिंग इन सेल्सफोर्स व्हिच इज कॉल्ड एन अप्रूवल प्रोसेस। ये सेंड एक्शन से आप बेसिकली अप्रूवल के लिए चीजें भेज सकते हैं। एंड टास्क इज something pretty simple. I'll just show you right now here. Let's take this employee is here, right? What you can do is task is actually a different object and इसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी टू डू आपके पास आइटम है कि किसी को फोन करना है, किसी को ईमेल भेजना है, राइट? इसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन नीड। कोई भी एक्टिविटी दैट नीड्स टू बी परफॉर्म, राइट, यू कैन जस्ट add it as a task in Salesforce. Now अभी ये क्या हुआ, मेरा एक टास्क क्रिएट हो गया जो मेरे को असाइंड है। इसका ड्यू डेट है 28 नवंबर। व्हाट आई हैव टू डू इज I have to, let's change it from other to call. Right? I have to call this person related to this. It's a normal task. Right? कोई add on अगर मेरे को information रखनी है तो वो I'll add in a come here. तो किसी and this is related with something, right? तो ये अभी यहाँ पे मैंने क्योंकि डायरेक्टली यहीं से बनाया तो दिस इज सेपरेट टास्क। बट नॉर्मली आप क्या करोगे, सपोज किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ टास्क रहेगा कि इस प्रोजेक्ट का बिडिंग करना है, इस प्रोजेक्ट में कुछ बाय करना है, इस प्रोजेक्ट में कुछ सेल करना है, ये ऑर्डर को क्लियर करना है। तो ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड सेल्सफोर्स। तो उनसे रिलेटेड आप टास्क बना सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केस। आई एम नॉट श्योर इफ देयर आर केसेस इन दिस एनवायरनमेंट। ओके, देयर इज अ केस। So what you can do is, I don't see the